Welcome back to our chemistry class, ऑनलाइन chemistry class and आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत सीबीएसई एंड नो आईसीएसई दोनों का दो कॉमन टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई में इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ऐसा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जो आईसीएसई का है तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर है। ठीक है। तो हमारा जो सीबीएसई जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये पहली क्लास है, लेकिन जो आईसीएसई का जो स्टूडेंट्स है तो उन लोगों के लिए एक ऑलरेडी हमने एक ऑनलाइन क्लास किया है। तो कुछ ऐसा जो है उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये पहला क्लास है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जानेंगे कार्बन के बारे में, इसका कंपाउंड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं ये carbon and its compound. Okay, so first we'll talk about the carbon. Okay, so carbon, if it is the the fourth no most abundant, fourth most abundant fourth most abundant element by mass. Actually, let's see, this is sorry. Yeah, so this is the carbon. So basically this is a fourth most abundant element by mass. Okay, in the universe. तो हम जो पूरा यूनिवर्स में ये जो इसका जो अवेलेबिलिटी है तो मास का हिसाब से, सो ये क्या है, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट। तो भूपृष्ठ में हम कंसिडर करेंगे तो ये है फिफ्थ नो फिफ्टींथ फिफ्टींथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास। ओके, तो हम ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है तो उसमें हम कंसिडर करेंगे तो इसका जो है ये सेकेंड 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 मोस्ट abundant एलिमेंट बाय मास। ओके, तो इसमें जो है तो हमारा यूनिवर्स में इसका जो abundant है और ये जो उपलब्ध है ये फोर्थ पोजीशन में है। और ये जो भूपृष्ठ में है ये फिफ्टींथ पोजीशन में है। और हमारा ह्यूमन बॉडी, सो दिस इज इन सेकंड पोजीशन। So basically again this is by mass. Okay, so this is after by mass after in our body. So basically this is in human body. Okay, sorry, this is in human body. Okay, so now if we go to the periodic table, so basically the carbon position, it is the sixth element, it is the sixth element in periodic table. Okay, so sixth position it is in periodic table, and it is no it has atomic number 6. It is having the atomic mass of 12. Okay, so not only that, इसके साथ साथ और भी आइसोटोप्स है जिसमें क्या होता है, इसके जो प्रोटॉन नंबर वो सेम रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ नो डिफरेंट neutron, so basically the mass change, and as a result so basically we got the isotope. तो कार्बन का जो आइसोटोप है ये तीन आइसोटोप है, और उन लोगों का जो मास है so basically C12, C13 and C14. So this is the basic information about the
the carbon. Then we'll talk about the occurrence और ये कैसे उपलब्ध होता है हमारा. So जो कार्बन है तो कार्बन वो occurrence. Okay, so the occurrence it available in no three form. So mostly इसको free state में मिलते हैं, free में मिलते हैं, free state, then free state, then no in the gas form, in the gas form, and in the no compound or the salt form. Basically this is salt and then compound. ओके, सो फ्री स्टेट में जो होता है सो एक्चुअली द एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. सो एलेक्ट्रॉन्स में उसमें क्या आता है, जो डायमंड आता है, डायमंड ग्राफाइट. ओके, डायमंड ग्राफाइट, diamond, graphite, coal, etc. This is, it is in a free state. Mostly the allotropes of carbon. और गैसियस स्टेट में कौन सा होता है दैट वी नो. सो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ये जो कार्बन का जो कंपाउंड है ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं. और सॉल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सो एटसेट्रा. ओके, और जो यहाँ पे जो कंपाउंड है मोस्टली इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, सो दिस इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये जितने सारे जो है एक्चुअली हमारा जो ये टॉपिक जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो मोस्टली हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ये जो फ्री स्टेट के बारे में भी ब्रीफली हम बताएंगे. उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें क्या रहता है, ये जो बोलते हैं ये एक्चुअली बोलते हैं जो कार्बन का कंपाउंड्स ज़्यादा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. और लगभग 50 millions carbon compounds. So 50 millions, 50 millions means 50 into 10 to the power no 6. Okay, the 50 millions number of organic molecules, who maybe the more than 50 millions number of no organic molecules are known to us. Okay, so organic molecules are known to us. So why we are having so large amount of the molecule? So basically it is having some unique property. So that is why we are having this many compounds. And this is why no, we learn about the organic chemistry a no separate topic. uh, तो ये जो केमिस्ट्री का जो डिवीजन है तो उसमें जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आएगा. तो उसमें ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरा कार्बन का कंपाउंड रहेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इवन ये इन योर +2. So if you going through in a science stream, or whether it is a medical or non-medical, so basically science stream, so you will have a one the in +2 you will have a good portion of the organic chemistry. Okay, so now we'll talk about the mostly we'll briefly discuss about the diamond, graphite, and the other allotropes, so which is important and relevant for your competitive exam. तो पहले हम पढ़ेंगे ये डायमंड के बारे में. सो अब सभी को पता है दिस इज डायमंड. एंड द डायमंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है जो hardest and purest form of carbon, hardest and purest form of of कार्बन. ठीक है,
तो ये जो है दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूनिक। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो कार्बन मॉलिक्यूल रहता है वो एक कार्बन दूसरे कार्बन से नो नो वन कार्बन इज सराउंडेड बाय द फोर अदर कार्बन। ठीक है, तो इसमें जो जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं, जो दिस इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल, टेट्रा टेट्राहेड्रल। Okay, so tetrahedrally one carbon is now attached to the other four carbon, and the shape we got, it is called the tetrahedron. Tetrahedron is something like this. So this is like a, if you try to think about in terms of in 2D plane. So basically in the center you will have a carbon atom, and now each corner you will have another four carbon atoms. So you can combine like this. So this is the kind of shape of your tetrahedron, and each carbon in diamond, so basically in three-dimensional, so they are closely packed, closely packed. So this is important. So like a, this is a, in three-dimensional closely packed, closely closely packed three-dimensional structure, three-dimensional three-dimensional structure. So because of that, so we are having like a very rigid and strong. So that is why the diamond is very hard, and frequently we use the diamond for glass cutting and jewelry purpose, and also cutting various machinery parts, and also the diamond is used for eye surgical purpose। ओके, तो वो जो आइस का सर्जिकल पर्पस में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो पार्ट्स यूज होता है, वो डायमंड से बना हुआ होता है। एंड दिस इज लाइक ए द पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो these are the few important points about the diamond, and this is the one of the the purest form of carbon। Okay, and सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द ग्राफाइट। सो इसमें क्या होता है, जो कार्बन का जो लेयर होता है एक्चुअली, इसमें दैट्स व्हाई ग्राफाइट, इफ यू कोड रिमेम्बर, तो ग्राफाइट हमारा जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल का लीड में रहता है। तो इसमें जो कार्बन का लेयर रहता है, और ये जो लेयर है यू कैन सी, सो बेसिकली दीज आर नो हेक्सागोनल लेयर। तो सो हेक्सा hexagonal, you know so carbon are hexagonal, and these layer are connected by weak van der Waals force। So this is the line, you can see यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली एक लेयर से और दूसरे लेयर, इसमें थोड़ा गैप है, और दैट्स व्हाई इट इज अ स्लिपरी। Okay, so graphite is little slippery, and these layers are connected to each other through weak van der Waals force। ठीक है, तो ये जो है ग्राफाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो होता है, जो ये थ्री, एक कार्बन और दूसरे कार्बन से यू कैन सी देयर इज ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू अदर थ्री कार्बन, एंड द अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो उसमें क्या रहते हैं, वो फ्लो करता है। दैट इज व्हाई द ग्राफाइट इट इज नो गुड, दिस इज ए good conductor of heat and the electricity। ओके, तो ये है जो ग्राफाइट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रॉपर्टीज है। तो ये कहता है नो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये ओनली नॉन मेटल है जो इसका नो गुड नो हीट एंड इलेक्ट्रिक, इट कैन नो ट्रांसपोर्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रू द ग्राफाइट। ओके, तो इसीलिए इसका जो बहुत इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड का रूप में यूज होता है,
इलेक्ट्रोड सॉरी इलेक्ट्रोड में यूज होता है मोस्टली. सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोड? सो बेसिकली इन अगेन we'll learn. So basically when we want to pass electricity in solution, so basically we need something so by which no the electricity can be passed through the solution. So basically this is the solution, so we need something, and that is called the electrode. Okay, so electrode इलेक्ट्रोड ग्राफाइट से बनता है, एंड दिस इज नो बिकॉज ऑफ दिस इज योर एडवांटेज लाइक इट इज नॉट नो रिएक्टिव टू मेनी सब्सटेंस. सो बेसिकली सम स्पेशल केसेस हम ग्राफाइट को इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं. और another important, so basically this graphite used as a lubricant because it is a slippery. So already we discussed. So basically they this layer which layers no they are connected to each other through weak van der Waals force. So that maybe we'll discuss about in the higher class, so you learn about all these things. So basically this is a weak force. Because of weak force they are not each layer connected to another layer no, without any chemical bond. So basically weak force because of that. So these are slippery, and this is used as a lubricants, lubricants, lubricants for no machinery purpose, machinery parts. Okay, so this is why the important of the graphite and then we'll talk about the fluorine. So basically this is a cluster of carbon molecule. This is also this is also made of carbon. So basically here the fluorine we call any kind of carbon cluster. So basically this is your carbon cluster, which could be the spherical, which could be the spherical like ball shape. And this is, if it is a ball shape like this, so then we call this is also the Buckminster fullerene. So basically this is called the Buckminster minister fullerene. Okay, so Buckminster fullerene, and this contains 3 carbon, no 60 carbon. So 60 carbon, and they are attached with the, if you see the hexagon and pentagon. Hexagon means you having 6 membered carbon, and pentagon means 5 membered carbon. So basically these are the structure. So they are fused together, means दोनों ये जो हेक्सागन और पेंटागन मिला के ये बनता है, और इसमें 20 हेक्सागन रहता है, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन रहता है. ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ बॉल के तरफ नहीं हो सकता है, मतलब बॉल का तो होता है, इसके साथ सो ट्यूब ट्यूब के तरफ भी होता है. इसके बोलते हैं जो कार्बन नैनो ट्यूब, एंड नो there are many other possibilities also is there. So all are this is called a fluorine. Okay, so basically fluorine are carbon cluster, and here we are having also no free electron. So that is why it is not as good as like the conductor property of the fluorine is not as good as graphite. ग्राफाइट की तरफ उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें है. तो इसका जो ये प्रॉपर्टी है, तो ये ड्रग में यूज कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रैक डिलीवरी सिस्टम्स, क्योंकि ये जो कार्बन है ये इतना मतलब एयर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. तो इसलिए इसके साथ हम जो ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे जोड़ के हम ड्रग डिलीवरी की तरफ ये इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये छोड़ के ये है आर्टिफिशियल एनर्जी कलेक्टर. सो बेसिकली so artificial photosynthesis. So basically artificial
no, sorry, artif artificial photosynthesis, फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है. सो artificial photosynthesis में इसका यूज होता है. So this is important. And again, so this is like a, it is different from the compounds like other compounds. So it is like a cluster, so you can get as a ball or as a tube, something like that. So these are the all the allotropes or allotropes of carbon. And ये सब क्या होते हैं, crystalline in nature. Okay, तो ये हम अभी जो इतना ये जो सीखा है, ये सब फ्री स्टेट कार्बन है. और दिस आर नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नो फ्यू competitive exam, just kind of a revision. So now we'll learn about the carbon so compound. So before carbon compound, so basically it is uh, the organic compounds. And before going this, we'll talk about the bonding of the carbon. Okay, so basically we'll say bonding. सो बॉन्डिंग में क्या होता है, सो हमने देखा जो है कार्बन का जो एटॉमिक जो नंबर है वो 6 है. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज एटॉमिक नंबर means the proton number, and we are having same number of electron. So basically now if we consider this one, so basically in our no 2 electron, so basically this is your 2 electron in K cell, then 4 electron in L cell. Okay, sorry. Yeah, so this is 2 electron in K cell and 4 electron in L cell. So what kind of bond it can form? So it can like a, if we learn in chemical bonding structure, so basically we learn about the covalent bond and ionic bond. So basically the ionic bond and covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसमें जो ऑक्टेट स्टेट, तो तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो पूरा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो नियरेस्ट जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो मिलने के लिए, तो इसको आइदर नो आइदर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा. तो दिस इज देन विल बी एन हीलियम लाइक स्ट्रक्चर, अदरवाइज इट हैज टू बी no it has to be no gain or accept 4 electron, so then it will be no closer to the neon. So then, but this process, for this process, so this you need a lot of energy. Okay, so that is why carbon does not form the ionic bond, better it form like a covalent bond. So basically it is having 4 electron in the outermost orbit. So this 4 electron combined with other no, element, so basically by sharing this. So for example, if we take the carbon plus hydrogen, so basically it gets 4 covalent bond. So in the outermost shell और बाहर का कक्ष में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. So 4 electron, sorry, 4 electron share with hydrogen atom, and it got 4 covalent bond. Okay, so this is your bond, so between the two pairs. So basically this is a mutual sharing of the electron between the carbon and hydrogen. So basically we are having the 4CH bond, 4CH bond. Okay, and these are all are covalent bond. Okay, and these 4 bonds, so again we learn, so basically this is tetrahedral or the tetrahedron shape. So basically the tetrahedral, so all the HCH bond angle, it is like a 109.2 degree. So 2 or 28 more accurately. So this is the the degree.
and this is the most important so we learn that carbon it form the only covalent bonds, not ionic bond, by mutual sharing of electron, not only with the hydrogen, with the other atoms, so basically carbon or some other elements the present in the periodic table. So this is now then we learn about that carbon can form like millions of compounds. तो क्यों इतना कंपाउंड ये इसमें से बनता है एक्चुअली, तो वो देर आर सम स्पेसिफिक रीजंस फॉर दिस. सो बिकॉज ऑफ दिस, सो the most important, the it form a strong covalent bond, strong covalent bond. तो उसमें क्या क्या होता है, ये नॉट ओनली विद द अदर एलिमेंट, सो बेसिकली विद द कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, with the most of the elements, so carbon form strong covalent bond. Okay, so this is the most one of the most important point. Then the it forms multiple bond, so basically mul multiple multiple bond. So it has a capability to form multiple bonds like a carbon carbon multiple bond, CC double bond, CC triple bond, maybe CCO double bond, CN triple bond, something like that. So it has a capability of forming multiple bond. So here multiple bond we'll talk about. So basically when there is only one bond, so that is we call the sigma bond. So it is written like this, sigma bond. If we have more than one bond, so then we call the first bond will be the sigma bond, then second bond will be the pi bond. So this is very important. So for this case, if you have a triple bond, so basically you are having one sigma bond. So basically you are having one sigma bond and two pi bond. So in the competitive exam, you can ask questions could be like there. You will be given some compounds and then find out how many sigma bond and how many pi bonds are there. So like that, then you have to know the structure. From the structure, or if structure is given, so basically आपको ये पता करना होगा जो इसमें कितना पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है. और अनदर प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कैटिनेशन प्रॉपर्टी. सो इसको बोलते हैं कैटिनेशन 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 प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. तो उसमें क्या होता है, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन मतलब जो इसमें होता है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये जो है ये लॉन्ग चेन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ते हैं और ऐसे मोर देन इवन इवन अप टू 100 कार्बन ऐसा जोड़ सकते हैं. जैसे हमने देखा जो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें C60 है, तो ऐसे ही अप टू 100, so we can have CC bond formation. So because of that we will have a chance to get a large number of molecule. Okay, so apart from that we'll also the large number of carbon compound is possible because of the isomerism. Okay, so we'll discuss later. So isomerism. So isomerism actually this is like a same molecular formula, molecular same molecular formula, but different, but different different structural arrangement. ओके, तो इसमें ऐसा ऐसा होता है. सो आइसोमरिज्म विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्हेन विल लर्न अबाउट द
the hydrocarbon. So there we'll discuss about the isomerism, but these are the most important. So basically इसमें क्या होता है, बहुत ही strong covalent bond बनता है, not only with the carbon carbon, carbon hydrogen, carbon ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो उसमें और क्या रहता है, जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने का जो कैपेसिटी है तो वो कार्बन में है। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसा बहुत सारे जो जो पॉसिबिलिटी बन जाता है नया कंपाउंड बनाने के लिए। एंड अनदर है क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कैटिनेशन क्या है, जो सेल्फ लिंकिंग। इसमें क्या होता है, जो जैसे हमारा जो हाइड्रोजन जब लेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन जो एटम है ये दोनों ही जोड़ सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें ये बनता है जो H2 बनता है। हम ऐसे ऑक्सीजन एलिमेंट लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये क्या बनते हैं, O2 बनता है, और मैक्सिमम क्या बनते हैं, O3 बनते हैं। So these are the like very little catenation property, but here you can see in case of carbon, so it can, you know, carbon can bind with the many carbons. Okay, so that we see in the graphite, we see in the diamond. So this is kind of, you know, catenation property. So basically the carbon carbon bond, and the isomerism we will discuss later in detail. Okay, so now we'll start with the actual the organic compound. Okay, so what is organic compound? So organic compound actually हमारा जो life है, तो ये पूरा life actually it depends on organic compound. Without organic compound, you know, without organic compound, this time, so like a present time, it is difficult to survive without organic compound. So basically you can think about the food what we are taking, so those are like a organic compound. And in the food again, if you think about the carbohydrate, protein, fat, so those all are, you know, organic compound. Okay, so for your, you know, bike or car, whatever the fuel you are using, so that is also organic compound. The drug molecule you are taking, basically the medicine, not in that, you know, bad sense. So basically the medicine you are taking, that is also your organic molecule. And the paints you are using in your home, or your clothes, those are made of like the fiber. And then whatever the color you are putting on your clothes, so those are also the organic molecule. So that is why, you know, क्या है, हम पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो ये जो है ऑर्गेनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो इन दिस लेवल हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ये डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है जैसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एंड द derivatives derivatives of हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हम ऐसे जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो हाइड्रो एंड कार्बन, सो बेसिकली हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। So basically, whatever the compound or organic compound that we know, that is made of with the carbon and hydrogen, that is called hydrocarbon. तो इसमें क्या होता है, जो फॉर नो सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है, तो ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं CH2n+2। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन हमारा n किसी की नंबर इंटीजर 1 2 3, एज अ n equal to 1 2 3 etc, no, up to n we can put, and then whatever the things we'll get, this is your hydrocarbon. Okay, so this is hydrocarbon. And now hydrocarbon, so the most common hydrocarbon that we use frequently in our, you know, cooking gas, the LPG gas we use. So basically those are made of, you know, hydrocarbon. Okay, so this is like a butane and, you know, mm, the mm, the pentane and, you know, propane, kind of mixture of, you know, different hydrocarbon. Okay, so these are the, you know, the example that hydrocarbon we use. And the hydrocarbon can be again divided into two parts. So basically that is called the saturated, SAURATB, saturated
saturated hydrocarbon and unsaturated 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 hydrocarbon. तो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब दिस इज सैचुरेटेड, यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, सो दिस इज a normal hydrogen, so saturated hydrocarbon, so this is frequently we called the alkane. Okay, so this is the general formula of CnH2n plus 2. So this is your the formula of saturated hydrocarbon, and unsaturated hydrocarbon could be two types again. So that is one your the alkene alkene or alkyne. तो इसमें क्या रहता है, इसमें जो होता है इसमें डबल बॉन्ड रहता है, जो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड रहता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस CnH2n. दिस इज नो the general formula of alkene, and alkyne, for alkyne we are having CnH2n minus 2. ओके, तो इसमें क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, जो एल्कीन बोलते हैं. ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड मींस दिस इज रिप्रेजेंट्स लाइक ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ओके, so this is your that based on the you know the depending on the number of uh, double bond or triple bond present, so basically we can calculate or we can say this is a saturated. If there is no double bond, so this we call saturated hydrocarbon, and frequently we call them alkane. And unsaturated hydrocarbon which contain double bond or triple bond, so this means like unsaturated means, so we can add hydrogen, so basically that will make you saturated. And this is again two types, alkene, alkyne. Alkene means so we are having double bond, and alkyne means you are having triple bond. तो एल्किल का जनरल जो एल्किन है इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, और एल्काइन का जो फार्मूला है Cn2n minus 2. Okay, so in the next slide, so we'll discuss about the derivatives of organic compound. So basically derivatives of derivatives of hydrocarbon, deri derivatives of hydrocarbon hydrocarbon can be again, so basically derivative of hydrocarbon, so basically we learn like a simple hydrocarbon for alkane CnH2n H2n plus 2. So basically if it is a 2n plus 2, so if we replace one hydrogen from this, so basically that will be CnH2n plus 1. Sorry. Oops. So 2n plus 1. Now, so this one hydrogen, if we replace with some group, so that is no that is called the derivative. So basically, we can derive this one, and it can be called like a the haloalkane, hello haloalkane, haloalkane, haloalkane. Then if we derive some nitro compound, so basically then nitroalkane. This is not the in your topic. So basically in your topic is haloalkane, and the alcohol, then aldehyde, aldehyde, then ketone, then carboxylic acid. So basically here the if you in the alkane, for example, it is not only the alkane, so you can also take a derivative of alkene and alkyne. Basically, so one hydrogen if you replace with any halogen, so that will be your the haloalkane. And if one hydrogen is replaced by this is if it is replaced by halogen means X, so that will be haloalkane. If it is replaced by OH, so basically one H is replaced by OH groups, or this is we call the groups,
functional group we'll discuss in the next class in detail. So basically, if H is replaced by OH, so that will be alcohol. If H is replaced by CHO, then it will be aldehyde. Again, if H is replaced by your or if we have a, it is if we have, so the for the carbonyl, this is keto, it has to be in the middle. Again, so if we have a, this is a group, so like is if we have a C double O group, so something like that in between the two carbons, so basically that will be ketone. And if we have a the carboxylic group, basically one hydrogen is replaced by C double O H, this is this group of atom, so then we call carboxylic acid. So this is all this group, so basically the halogen OH or CHO, this will be directly linked to the carbon atom. Okay, so the basically in the carbon atom, if we have this kind of X or OH or CHO, that will be your aldehyde. But for ketone, it has to be in the middle. So basically, in between two. So basically, this will be you are having this side, you are having another hydrocarbon. This will be another hydrocarbon. So basically, that will give you ketone. And the carboxylic acid. Sorry, the carboxylic acid, when you are having the COOH group, so that will call the carboxylic acid. So in the next class we'll talk about the hydrocarbon in details. So basically the alkane, alkene, and alkyne. Okay, and in the next and their isomerism, and of course we'll learn about their properties and things like that. Okay, so with this note, thank you and see you in the next class.